Dear students, chapter number 8, exercise number 8.2, question 2. Choose the correct option and justify your choice. Here is given 2 tan 30. We write here 2 tan 30 upon 1 plus a tan square 30. Write here equal. Keep 2 as it is. In place of tan 30 we substitute here 1 by root 3. 1 as it is. In place of tan 1 by root 3 whole square. Here is equal 2 into 1 2 root 3 as it is. In denominator we can say 1 as it is, 1 square 1 and root 3 square 3. Now here student, we take LCM in a denominator, keep numerator as it is. Here is equal 2 by root 3. This is our main line. LCM in a denominator, the LCM of 3 and 1 be 3. Here 3, here 3, 3. Here 1, here 1, 1. Now, then देखो इस सबसे ऊपर है, it is a main numerator, it is a main denominator. They never change their place. 2 as it is, 3 plus 1 4 as it is. Main numerator and main denominator never change their place. This root 3 we take in denominator and these 3 gone in a numerator. We cut here 2 to the 4, 2 to cut. 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? root 3 into root 3. root 3 cut. So here is remaining root 3 by 2. And what is root 3 by 2 value of this 4? Whose value is root 3 by 4? Sin 60. याद करो टेबल. Sin 30 1 by 2. Sin 45 1 by root 2. Sin 60 root 3 by 2. So our option is equal to sin 60. So our option is A sin 60. This is our answer. Okay. Cos 60 का वैल्यू कितना है? 1 by 2. Tan 60 का वैल्यू root 3 and sin 30 1 by 2. So these 3 options are not possible for given question. Okay. Now second. 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45. 1 as it is. What is the value of tan? 1. तो 1 स्क्वायर tan 45 का वैल्यू 1 है. 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 अपॉन 2. और आंसर इज 0. सो D is our option. D is equal 0. सो ऑप्शन D आंसर होगा हमारा. ये सब देखने की कोई जरूरत 1 तो आएगा नहीं. sin 45 का वैल्यू 1 by root 2 है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90? तो याद करो बच्चों, sin 90 का वैल्यू कितना है? 1. cos 90 का वैल्यू कितना है? 0. 1 by 0 कितना होगा? इंफिनिटी. तो cos tan 90 तो इंफिनिटी है. सो वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. sin 2a is equal to sin a. Is it true when a is equal blank? तो suppose we take a is equal 0, a is equal 30, a is equal 45 and a is equal 60. First take LHS. तो बच्चों sin 2a is equal sin 2 into 0 sin 0. What is the value of sin 0? It will be 0. And now RHS
2 साइन है 2 साइन ए की जगह पे हम 0 लिखेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0 है, 2 into 0 0. So here we can say if we take a is equal 0, the value of sine 2a and 2 sine a is equal. So for a is equal 0, sine 2a is equal to sine a. This is the right option. हमारा आंसर यही आने वाला है, लेकिन अब सबको चारों को चेक करेंगे. We check all the options. Look, आंसर हमारा 0 आने वाला है. Now we take once again sine 2a, sine 2 keep as it is in place of a 30, sine 60. What is the value of sine 60? Root 3 by 2. Okay. Now we take RHS 2 sine a, 2 as it is in place of a 30. Sine 30 का वैल्यू 1 by 2 है. 2 to cut 1. For 30, sine 2a does not equal sine 2 sine a. So this option is not possible. Now a is equal 45. Sine 2a, sine 2 into 45, sine 90. याद करो बच्चों, 0 90 0 1 1 0. साइन की वैल्यू 0 1 1 0. सो इसका वैल्यू आएगा 1. ओके, ये सब मैंने आपको टेबल में बताया है. ऑल दिस वैल्यू वी लर्न in table. Now here 2 sine a, keep 2 as it is in place of a 45. We can see 2 sin 45 का वैल्यू 1 by root 2. अगर हम कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? root 2, because 2 is equal root 2 into root 2. This root 2 cut. So इसमें भी 445 sin 2a does not equal to sin a. ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है. एंड a is equal 60. a is equal 60 sin 2a, sin 2a, sin 2 into 60. The answer will be sin 120, and it is not in our syllabus, so ये possible नहीं होगा. Okay, it is not in our syllabus. ओके, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. a इज इक्वल 0 हमारा आंसर होगा. ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है. नाउ लास्ट एंड फास्ट, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस a tan स्क्वायर 30 इक्वल, बच्चों ध्यान रखना, इक्वल के साथ मेन लाइन 2 as it is. In place of tan 30, the value of tan 30 is 1 by root 3. 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, root 3 का स्क्वायर 3. बच्चों डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आया, तो क्या रहेगा हमारा एक्शन? व्हाट इज अवर एक्शन? पहले देखो मेन लाइन, इक्वल के साथ हम मेन लाइन करेंगे. हियर 2 by root 3, and here we take LCM, and the LCM be 3. Here 3, here 3, 3, here 1, here 1, 1. This is our main numerator, this is our main denominator. They never change their place, so keep 2 and 3 minus 1 also 2. This 3 we take in numerator, and this root 3 we take in denominator. 2 to cut, 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं बच्चों root 3 into root 3. root 3 cut, so remaining root 3. Now see me, इसमें से किसका वैल्यू root 3 है? तो देखो cos 60 1 by 2, sin 60 root 3 by 2, tan 60 root 3. So is equal tan 60. So our option C is equal tan 60 होगा. sin 30 का वैल्यू क्या है? 1 by 2. So this is our answer. Okay, friends.
It is very simple and very easy. Thank you.